that's the now Google की सबसे बड़ी खासियत ये है, which is where people from slightly on the digital side or the IT side will agree with me, is it is a completely transparent platform. So you can get search volumes कि कितने लोग suppose हमने ऐसी सर्च मारी, होजरी इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं, तो 81,000 people, 8100 people are searching for identity searches for hosiery. Now you can drill down to specifics कि इसमें से नागपुर में कितने सर्च कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हो आपका, आप एग्जैक्टली जाके पता कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स से कि उसकी सर्च वॉल्यूम कौन सी सिटीज है, कौन से स्टेट्स है, कौन सी कंट्रीज है, कोई भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, तो इट गिव यू द एग्जैक्ट वॉल्यूम पीपल आर सर्चिंग ऑन for that particular keyword. And then there are keyword analyzers which also tell you कि ये keyword पे सबसे ज्यादा searches पे rank कौन ऊपर कर रहा है, उसका competition क्या है, वो सारी चीजें. The analytics tool for Google is a phenomenal tool and it gives you everything free. You don't need to pay for it. And then plan what you want to do on Google, right? So this is very, मैंने कुछ ऐसी skin specialist नागपुर. Can you imagine? हमको लगता है सबको हमारे we know our skin dermatologist or we can ask a friend care which dermatologist do I go to etc. 10,000 people are searching for dermatologist in Nagpur every month. Doesn't it come as a surprise to you? Doctors might feel, and most doctors do, since I've done a lot of programs with the IMA and doctors, that hardly digital कुछ भी नहीं मायने नहीं रखता. Who are these people going to? They don't know a doctor, they don't know a person who they can ask. So they search from Google and go there. As simple as that. So this is pumps. So pumps की there are 40,500 searches every month average in India, and you can actually see everything कि वो कौन सा season होता है, कब searches बढ़ती है, कब कम होती है, कौन से region में कब बढ़ती है. You can drill down to the last detail for free. Any term that your own product or service, all right. So everything in Google is about ranking. If you're not there, there is no point. So it is often said that what is the best place to hide a dead body? अगर आपका हाथ से किसी का खून हो गया और आपको बॉडी छुपानी है तो आप क्या करोगे? Page 2 of Google search research. Google reaches से page 1 में हमारा काम हो जाता है, page 2 पे हम पहुंचते ही नहीं कभी भी. So page 2 पे भी अगर आप आ रहे हैं, so you are not good enough because research also tells us the people the amount of traffic reaching the page 2 for any search drops so dramatically, meaning it is only about 20% of the people carry on because कुछ भी नहीं मिला front page पे, तब वो second page पे जाता है. So page 1 का इतना ज़्यादा importance है. और ये क्या होगा अभी इसके बारे में और हम देखते हैं थोड़ा सा जल्दी. So page 1 में आने के लिए दो तरीके होते हैं. हम search engine optimization बोलते हैं एक तरीका, ये organically बिना Google को पे किए आप ऑर्गेनिक. अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता. गूगल के क्रॉलर्स जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, उनकी एल्गोरिथम्स होती हैं. एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड ट्रांसपेरेंट. ऑलराइट, यहाँ इस पार्ट में कोई बायस है ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सम केसेस ऑन गूगल गोइंग ऑन इन यूरोप एटसेट्रा वेयर दे आर सेइंग दैट गूगल हैज ट्वीक्ड द एल्गोरिथम इन फेवर ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स इन सर्टेन केसेस. बट देयर टू वेज व्हेन यू डू एसईओ. एक तो ऑन पेज मतलब आपकी वेबसाइट के साथ आप जो चीजें करोगे, जहाँ मेटा टर्म्स लगाने वगैरह लगाने, वो दैट इज ऑन पेज. एंड ऑफ पेज इज away from your website to another website, PR websites, directories, registers, etc., leaving comments, links, etc., backlinks. All that you will do elsewhere, not on your own website, is off page. This is very technical. I can assure you, मुझे भी नहीं आता है. हाँ, तो एक टेकी को छोड़ के बहुत कम लोग मतलब अगर दिमाग लगा के करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं. But point is कि this is best left to people who do it, and it's a donkey's work because this is physical work actually. You have to constantly go to various directories, keep registering yourself, keep refreshing things, etc., etc. So this goes on and on. But you have to know which keywords, and that keywords come from Google Analytics for your particular category. All right. So हर चीज़ है. Suppose you want to take assignments as a speaker abroad, so you now search for what topic, how many searches for what speakers, and then you decide. You look at your comparative analysis. किसको कितनी searches के results मिल रहे हैं, कौन ज़्यादा रैंक हाई कर रहा है, वो क्यों किन कीवर्ड्स पे कर रहा है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं. All the listings you will get, and then you have to do something where you can start tweaking the whole process, which is called SEO, without paying Google anything, and start rising. So this is SEO. The other way to do this is Google AdWords. आप आज काम शुरू करते हो, आपके पास इतना समय. Incidentally, through search engine optimization, depending on the category competition and the town and location where the search is happening from, it might take you anywhere from 3 months to 8 months to a year to come onto the first page.
if you're looking at some category like mobile phones, for example, highly competitive, highly competitive. E-commerce की side है, ये है, वो है. So it might take you a very long time. You may still not land up on a front for first place because there are so many big companies putting huge budgets behind that. So what is the other way? The other way is Google AdWords, which is basically what we also call as native advertising. Native का मतलब होता है आप जहाँ के हो वैसे दिखो. मैं इंडिया नहीं दिखूंगा, मैं यूएस में भी जाऊंगा तो अलग दिखूंगा, यहाँ मैं इंडियन में मिक्स हो जाऊंगा. तो मेरा जो ऐड होगा वो इनमें मिक्स हो जाएगा, इनका नेटिव दिखेगा, वो ऐड नहीं दिखेगा अलग से. तो अगर मैंने सर्च किया बाय टी शर्ट तो ये हमको ऐसे रिजल्ट दिखेंगे, हमको सब लगेगा गूगल के रिजल्ट है. लेकिन जो सबसे ऊपर वाला है उसमें अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ स्मॉल ग्रीन में AD लिखन, दैट टेल्स यू दैट इट्स एन एड, दिस इज पेड. Okay, and this is organic, मतलब non-paid results which have come because of the activity of SEO, etc., etc. Now जो paid part है बहुत quickly कितने बज रहे हैं? हाँ, so paid में Google का real time bidding होता है. ये bidding दो चीजों पे depend करता है. एक of course supply and demand, कितने लोग, और ये real time में जब होता है तो नागपुर से सर्च हुई है तो किसी ने नागपुर एज अ लोकेशन उस सर्च का कीवर्ड में अपने बिडिंग में डाला है, तो नागपुर में जितने लोग बिड कर रहे हैं वो कीवर्ड में जिससे सर्च हुई बाय टी शर्ट और नागपुर से सर्च हुई है, तो नागपुर में जो बिड किए हैं उनका रिजल्ट दिखेगा. तो फंकी ग्राफिक टी शर्ट हैज बीन बिड बाय समवन फॉर नागपुर सिटी स्पेसिफिकली. इफ दैट while releasing the ad, if I had not inserted town Nagpur I wanted or Maharashtra for example, so महाराष्ट्र में अगर मैं करूंगा तो पूरे महाराष्ट्र में कोई भी टाउन से सर्च आएगी तो दिखेगी. Are you with me? तो मेरा ऐड दिखेगा. अगर मैं इंडिया बोल दूंगा तो पूरे इंडिया में बाय टी शर्ट की कहीं से भी सर्च होगी तो उसको ऐड दिख सकता है. तो 100% ऐड किसी के नहीं दिखते हैं टू बिगिन विद. तो यू मे बी द बिगेस्ट जायंट बट 100% लोगों को आपका दिखे जरूरी नहीं है. तो पहला तो ऑफ कोर्स है सप्लाई एंड डिमांड, उस पर प्राइस डिपेंड करता है कि पर क्लिक चार्ज होते हैं. जब आपका ऐड दिखाया जाता है यू आर नॉट चार्ज एनीथिंग. ओनली व्हेन समवन क्लिक्स ऑन दिस ऐड विल यू गेट चार्ज फॉर इट. Okay, now that as I said, one is of course the price, the bidding price. Google has a range that it suggests कि इतने आप नागपुर शहर में टी शर्ट का करना चाहते हो तो this is the range in which per week अभी चल रहा है. So you decide a price and you put that price there. But it is not necessary that if you put a price there you will always get shown more often. The second score is called the relevancy score, which is if it is a t-shirt search and you say I want the t-shirt के search के page पे ad, but I sell buttons for example. So buttons is not directly related to t-shirt का. ये पूरी एल्गोरिथम्स हम गूगल और फेसबुक जो भी कंपनी से बनाती है कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए, ये आपके लिए नहीं बनाती है. Therefore they are where they are today, right? So consumer experience will become poor if on a page of t-shirts, someone searching t-shirts, buttons or stickers would be shown. But for that guy it might be important. So relevance is low, bidding may be low. Relevance is low, being low, he will be charged a higher price because he is releasing an irrelevant ad on a page. Is that very clear? So there are two, it's a multiplication of two factors. One, the going rate for that that day, that point in time, that second. Okay, and the other is the relevance. So if it's a t-shirt ad, clear relevance, you will get a lower price. Someone else, same place, something else, not relevant, another price, different price. And this all happens in real time. Real time meaning microseconds. So that's how it's getting calculated. The ad is being served. आपका गूगल के रिजल्ट में आप देखते हो सो मेनी रिजल्ट सर्व्ड इन 0 point some seconds. So इतनी फास्ट सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं. So imagine the power of, and कितनी सर्चेस हो रही हैं वो भी हमने देख लिया अभी. That is the kind of technology they are using. So as I said, this is the ad and the rest is this. So moving to social media now. 66% of the 33.177 million internet users regularly access social media platforms. In fact, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो हम लोग कुछ भी भूल के आगे चलेगा, मोबाइल घर पे भूल गए या कहीं रह गया तो इट्स लाइक पैनिक, इट्स सीरियस पैनिक, एंड वी विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ मिनट ऑन व्हाटएवर वी आर डूइंग, विच समहाउ ensuring that we rush or someone else rushes on our behalf and gets a mobile phone in our hands, and that's primarily because not to receive calls, social media. That's primarily for social media. Okay, but in social media बोले तो again कौन सा, there are zillions of channels out there. So मेरा वाला ping कौन सा है? So every channel has its own attributes and you have to match your own objective to those attributes to get the best out of them. So as I explained अभी थोड़ी देर पहले वो relevant example नहीं है क्योंकि Google is not social media, Facebook is social media, but Google is intent based. So half the buying journey is already done. Whereas on a Facebook, you assert something which you're not looking for, searching for, so you might be at the top of the funnel. So whenever we design a strategy, there's a funnel made. So
outer circle is pure accidental exposure, and then you keep moving down, interest, desire, converting them, and then finally behavioral aspect of a purchase or a click. So you have to design your own funnels. So depending on what you want to do, there are so many more, but हमारे लिए जो important है, that is Facebook. So I didn't mention this, but we are already way ahead of US in terms of Facebook connections from India. 250 million people, the last count, and this keeps increasing every day, were connected to Facebook compared to 230 million in the US. But again, our population is what it is. So that's the key advantage. इसको आजकल हम demographic dividend बोलने लग गए हैं. So this demographic dividend is being wasted on Facebook, if you ask me. Anyway, so how are people using Facebook? पहला, of course, ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि हमारी प्रोफाइल बनती है. So profile is my personal, I will not even call it a page, but personal presence on Facebook. Then you have groups, common interest होते हैं कुछ, तो आप groups बनाते हो, जैसे WhatsApp पे भी बाद में groups बने हैं, but Facebook में पहले से, पर बहुत कम लोग participate कर रहे हैं हमारे शहर से groups में. Outside it's a huge thing. Then there are pages. Pages are the lifeblood of a business today. Profile, ठीक है, profile होना जरूरी है, because you can't create a page without having a profile. So anyone wants to create a page, he first has to create a profile or use someone's profile to create a page. Pages get created only when you have a profile because they want to authenticate you. And इसलिए आपने देखा होगा कि आपका ऑथेंटिकेशन इतना क्लियर होता है कि बाकी का सारी वेबसाइट भी बोलती हैं लॉग इन थ्रू गूगल और लॉग इन थ्रू फेसबुक. सो यू हैव टू गिव योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दे सेंड यू अ कोड, यू वेरीफाई यू गॉट दैट 4-digit, 6-digit code, and therefore they know that you've got this mobile phone. आपका मोबाइल फोन आधार से लिंक हो चुका है या दूसरे डॉक्यूमेंट से. So this whole cycle is now complete. So anyone, once upon a time, people could game the system के मोबाइल फोन नहीं लगते थे उस समय, नहीं मांगता था फेसबुक. So कुछ अकाउंट्स हैं पुराने जिनका ऑथेंटिकेशन आज भी नहीं हुआ होगा, but there will be very few. Currently everything is authenticated. So प्रोफाइल की ऑथेंटिकेशन है तो पेज के पीछे कोई जेन्युइन बंदा है, उसको पकड़ा जा सकता है. Then Messenger is becoming a very strong platform today. In fact, you can today after you paid Facebook, send your ads or conversations directly to the messenger box. You no longer need to be on the newsfeed also. And Facebook is giving out free messenger bots. That means आपकी कंपनी के लिए आपके हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं, AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके आंसर आपका फेसबुक बॉट कर सकता है उसके प्रैक्टिस के बाद. लाइक लैंग्वेज आपकी पहचान लेता है थोड़ी देर के बाद श्री, तो आपकी भाषा को वो कन्वर्ट करते चले जाता है, एक्ट करते चले जाता है. वैसे ही आप जब थोड़ा सा एक्टिविटी करते हो अपने मैसेंजर बॉट में, कुछ तो स्टैंडर्ड आंसर्स हैं उसके that can be fed, and over a period of time it learns how you react and how your customers interact with you and does this for you. That the bots is the next big thing incidentally. And events is very powerful on Facebook. So these are the few ways that we use. अभी बहुत सारी और चीजें भी आ गई हैं like Facebook Watch and all. Watch is like having a television channel there. Now we come to the most important part, because 90% of us in India, or sorry in Nagpur, would be keen on Facebook पे कैसे प्रमोट करना है. गूगल एडवर्ड्स भी कम करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, थोड़ा इंटरकनेक्टेड कम लगते हैं हम लोग, क्योंकि सोशल नहीं है, इसलिए यहाँ इमीडिएट रिएक्शन पता चलता है मुझे. सो बहुत सारी चीजों के कारण what we observed is when a new person starts taking on to digital, the first platform that they start using is Facebook in Nagpur. I'm talking specifically of towns like Nagpur. They later graduate to Google, but then Google has got today a lot of agents going around in the market, and therefore they are trying to convert people onto Google AdWords. It's happening with a lot of people. So, but Facebook we should definitely spend more time on, I think. And I come back to this slide कि अब आपके पास अगर सिर्फ Facebook पेज है और आप रोज डिजाइन करके पोस्ट डालते हो, प्लीज बंद कर दो. क्यों? This is where I want to spend some time and talk to you about. This is my most important slide. The Facebook's secret sauce. Secret sauce का मतलब होता है वो एक स्पेसिफिक चीज जिसके कारण आप एडिक्ट हो जाते हो और बार बार पहुंचते हो, हाँ, वो जगह पे. That's the secret sauce of Facebook. इसको अगर हम समझ लिए ठीक से, उसका थोड़ा सा हमको लॉजिक समझ में आ गया, so then we will be able to use Facebook better. एक तो सिंपल है कि आपकी प्रोफाइल की बात करता हूँ. So on a profile, when you open Facebook, you see a news feed. 3 कॉलम दिखते हैं, सेंटर में बड़ा रियल एस्टेट, साइड में 2 छोटे कॉलम, ठीक है. तो एक साइड तो एडवर्टाइजिंग होती है, एक साइड आपके बाकी के टैब्स होते हैं. ओके, जो बीच में है जिसमें लोगों की पोस्ट आपको दिखती हैं, that is called the news feed. And the news feed is the key reason that you're addicted to Facebook. That news feed. All right. How do you get to see what and how much of it is what decides the
level of addiction to Facebook. So now, if suppose I have an average Indian Facebook user probably has about 1,500 to 2,000 friends. Now, if 200 out of these 2,000 people, even 1,000 start post something every day. They post something every day, and you get to see 1,000 of these posts every day. You will probably go mad. You'll be overwhelmed with content, and you will probably give up Facebook. So what Facebook now has to keep you addicted to it. So what does it do? It looks at your interests, and though you are friends with 2,000 people, of which 1,000 are posting something every day, you don't get to see all 1,000 posts. You get to see some of those posts. How does Facebook decide? So it's got different criteria and different weightages to each of these. So one is recency, for example. तो फ्रेश पोस्ट सबसे पहले दिखेगी, पुरानी पोस्ट धीरे धीरे दबते चले जाएगी, नहीं दिखेगी. देन आपका उसके साथ इंटरेक्शन. सो हर इंटरेक्शन को वेट अलग अलग दिया हुआ है. सपोज यू लाइक हैज अ लोअर वेट. सपोज यू कमेंट, उससे ज्यादा वेट दिया है. सपोज यू शेयर दैट पोस्ट, उससे ज्यादा कमेंट दिया है. यू शेयर इट विद अ कमेंट, उससे ज्यादा दिया है. सो नाउ इफ आई constantly liked someone's post or written comments or shared, I will get to see more of that person's post. Alright? And if I have not interacted with someone, over a period of time, that post will not come to me at all. But that doesn't mean, no, we believe the other thing is also true, that if we are commenting, liking, etc., the other person will also get to see my post. No. That person gets an individual feed. So you may therefore feel, at times I meet people say, I keep liking his photos and he never likes my photos. So I will also stop liking his photos. Normal complaint we get to hear, right? The idea is that if that person has not liked your content or done something with your content, that person will not see it only. So if the person is not seeing it, then there is no way that the person will like it, because it can use my idea. So Facebook has to balance between these two. One, not overwhelm you with content. Two, not give you so little content that you have nothing to do. अभी आप 15 मिनट खाली हो तो what you relax, पीछे हो जाते हो और फीड चल रही है. इतना मसाला भी होना चाहिए, और मसाला वो होना चाहिए. फेसबुक ये पूरा एआई पे काम कर रहा है कि आपके इंटरेक्शंस की वजह से फेसबुक को पता चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज इंसिडेंटली एवरीथिंग that you are doing is being fed in. So suppose you held on to a post, you've not liked and done anything, but you waited there for quite some time. That is also being read into the system. If you're only hovering over that for some time and trying to do